बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3 and the period is mathematics, and this is video number 5, week number is 6. In our last video we have completed our unit number 5, and so today we are going to start unit number 8, which based on geometry. Okay students, what is geometry? Geometry is the branch of mathematics in which we study about lines, angles and the solid shapes. Alright, and we have discussed about lines and angles in our first semester midterm. So today we are going to start unit number 8, which is 2D and 3D shapes. Alright students, what are 2D and 3D shapes? 2D and 3D shapes are the solid shapes. Okay, the shapes that have 2 dimensions are called the 2D shapes, and the shapes that have 3 dimensions are called the 3D shapes. Look at the definitions. Okay, the shapes that have 2 dimensions. And what are 3D shapes? The shapes that have 3 dimensions. ओके सर, नाउ व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या है? वो शेप्स जिनकी 2 डायमेंशंस होती हैं वो 2D शेप्स कहलाती हैं, और 2D और 3D शेप्स होती कौन सी? सॉलिड शेप. द सॉलिड शेप्स आर 3D एंड 2D शेप्स. द शेप्स दैट हैव 2 डायमेंशंस आर कॉल्ड 2D शेप्स, एंड द शेप्स दैट हैव 3 डायमेंशंस आर कॉल्ड 3D शेप्स. नाउ व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायमेंशंस? डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन इज अ मेजरमेंट. ठीक है, डायमेंशन क्या है? मेजरमेंट है, सच एज लेंथ, विड्थ और हाइट. यानी किसी भी शेप की जो लेंथ होती है या विड्थ होती है या हाइट, वो क्या कहलाती है? उसकी डायमेंशंस कहलाती है. लुक एट हियर. Dimensions are the measurement ठीक है, such as length, width and height. ओके, अब वो शेप्स जिनकी 2 ही डायमेंशंस होती हैं, यानी उनकी सिर्फ लेंथ हो या विड्थ हो, वो आपके पास 2D शेप्स कहलाएंगी. और वो शेप्स जिनके पास 3 डायमेंशन, जिनकी 3 डायमेंशंस हो, यानी लेंथ भी हो, उसकी विड्थ भी हो और उसकी हाइट भी हो, तो वो आपके पास कौन सी शेप्स कहलाती हैं? 3D शेप्स. सो आवर फर्स्ट यूनिट इज नेमिंग 3D शेप्स. ठीक है, हमारा जो पहला लेसन है वो 3D शेप्स पर डिपेंड करता है. सो फर्स्ट यू मेक द टाइटल पेज ऑफ यूनिट नंबर 8, 2D एंड 3D शेप्स, एंड लेसन नंबर 1, नेमिंग 3D शेप्स. ऑलराइट, look at here.
This is a solid shape. Okay, this is the solid shape and it has 3 dimensions. This is the length, ठीक है, L stand for length, and also the width. This is the width. Width यानी चौड़ाई. And it also has a height. Okay, H stand for height. Height यानी उसकी ऊंचाई. Length means लंबाई, width means चौड़ाई, and H stands for height. It means इसकी ऊंचाई. This shape has 3 dimensions. ठीक है, इनकी 3 dimension है. So this shape is called a 3D shape. Now what is the name of this shape? This is a cuboid. The name of this shape is cuboid. क्या नाम है इसका? Cuboid. This is a cuboid and the 3D shapes are made up of 3 things. ठीक है, जो 3D shapes होती हैं वो 3 चीजों से बनी हुई होती हैं. The first one is face. जो पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? Face. Now what is the second part? That is edge. जो लाइंस आपको नजर आ रही है, this is called edge. And also the vertex. The corner is called the vertex. 3D shapes are made up of 3 things, that is face, edge and vertex. Face, edge and vertex. Now what is face, what is edge and what is vertex? Face is a flat surface. Look at this shape. Look at this. This is the cuboid. Okay. The flat surface which you can see here, this is called a face. A cuboid has 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, these flat surface is called a face. These flat surface is called a face. And what is edge? Second जो चीज है वो क्या है? Edge. What is edge? Edge is a meeting point of 2 faces. यानी जहाँ 2 फेस आपस में मीट करते हैं, like this. जहाँ 2 फेस आपस में मीट करते हैं, this is called a edge. 2 face are meet. This is called a edge. And what is vertex? Vertex is a corner. Corner of the shapes is called a vertex, like this. ये corner, this and this. These all are the vertex. एक होगा तो vertex, बहुत सारे हैं तो vertices. All right, and this is a cuboid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. These are the 8 vertices. All right. Okay, so now we are going to start our lesson. Look at your question number 1, which is on page number 72. Name each of these shape. आपके पास यहाँ कुछ शेप ड्रॉ हुई है, आपको हर एक का नेम बताने के what is the names of these 3D shapes. Okay, all are the 3D shapes. The first one is square base pyramid. ठीक है, this is the square base pyramid because it has a square base. This is called a square base pyramid. This is a square base pyramid because it has a square base. The next one is tetrahedron. The next one is part B जो है वो आपका क्या है? Tetrahedron. Look at this shape. This is a tetrahedron because it has 4 faces. Tetra means 4. 1, 2, 3 and this is the 4th face. So this is called the tetrahedron. Next one is cylinder. Look at this. This is a cylinder. Cylinder and cone has a curved face. आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इसका क्या है? Curved face है. This is called a cylinder. And the next one is part D is cone. This is also a 3D shape. Okay, this is the cone. And part E is, this is the triangular prism. Okay, triangular prism इसे क्यों कहते हैं? Because it has a triangular face. You can see here, this is the triangle face 1 and 2. ठीक है, इसके 2 triangular faces हैं और rectangular faces भी हैं 1, 2 and 3. That's why it is called a triangular prism. And part F is a sphere. This is a sphere. Sphere is also a 3D shape. All right. And part G is a
क्यूब, दिस इज अ क्यूब. अ क्यूब हैज 6 फेसेस. ठीक है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं और 6 स्क्वायर फेसेस. अ क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस. 1 2 3 4 5 and this is a 6 face. All right. And the last one is cuboid. This is the cuboid. Cuboid has also 6 faces but 4 faces are rectangle. ठीक है, क्यूब और क्यूबाइड सेम ही होते हैं, इनके एज, फेस, वर्टेक्स सब कुछ सेम होता है, बस इनमें डिफरेंस क्या है. क्यूब हैज 6 स्क्वायर फेसेस. क्यूब के जो है वो 6 स्क्वायर फेस होते हैं और क्यूबाइड के जो है 4 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और 2 क्या होते हैं इसके स्क्वायर फेसेस. ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव गॉट इट. नाउ लुक एट योर बोर्ड. Look at question number 1 on page number 72. Okay, part A. As I told you, part A is a square base pyramid. You can see here, this is the square base pyramid. Look at this, this is a square base pyramid. You have to write here square base pyramid. Okay, part B. Look at part B. This is the tetrahedron. All right, this is the tetrahedron. This shape is look like this. Tetrahedron 1 2 3 and 4. Tetra means 4-sided shape. We write here tetrahedron. Tetrahedron. This is also called triangular pyramid. All right. But we write here tetrahedron because हमारी बुक में tetrahedron इसको नाम दिया है, इसलिए हम इसे tetrahedron भी कहेंगे और इसको triangular pyramid भी कहते हैं. Look at the shape C. This is a cylinder, as I show you. Look at this. This is a cylinder. Look at shape D. This is a cone. As I show you, look at this. This is a cone. Okay. And part E. Look at this shape. This is a triangular prism. Triangular prism. Look at this shape. This is a triangular prism. Okay, sir? Because it has 2 triangle faces. Look at part F. This is a sphere. This is a sphere. It is look like that. Now look at shape G. This is a cube. ठीक है? As I show you, look at this. This is a cube. A cube has 6 faces, 6 square faces. All right. And the last one is, this is a cuboid. Look at this shape. Like this. This is a cuboid. Okay, sir, I hope you have got it. You have to memorize the spelling of these shapes, all right?
Now come to the question number 2. Name the odd shape out in each set. You have some shapes. ठीक है, आपके पास ए पार्ट ए बी सी डी, इनमें कुछ शेप बनी हुई है. आपसे कह रहे हैं नेम द ओड शेप आउट, यानी इनमें जो शेप अलग आपको लग रही है उस पर आप सर्किल भी करिए और उसका नेम भी लिखिए. यू गेट द बोर्ड. क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज नंबर 73. पार्ट ए. Look at this part A. Look at this shape. This is a triangular prism. Look at another shape. This is also a triangular prism. This is also a triangular prism. This is also a triangular prism. But look at this shape. This is not a triangular prism. This is a tetrahedron. ठीक है? तो कौन सी odd shape हुई? This is the odd one out. Alright, this is the odd one out. So we put the circle on it and write the name here. Tetrahedron. Look at part B. Look at this shape. This is a cube. This is a cuboid. This is also a cuboid. Cuboid. All shapes are cuboids, but this is the odd one out. This is a cube. So you put the circle on it and write here. All right. Now look at this. This is the square base pyramid. This is also a square base pyramid. Square base pyramid. But this is a triangular prism, and this is a square base pyramid. सारी square base pyramid है except this. So you put the circle on it and write the name here. All right. Now look at part B here. All shapes are cylinder. This is the cylinder. This is also a cylinder, but this is the cone. Okay. So you put the circle on it. Cylinder. सारी shape cylinder है. बस ये इसमें क्या है? Odd one है. So you put the circle on it and write the name here. Okay, you have to solve part BC yourself and you do your unit number 8 in your book. Make the title page in your copy. Title page आप कॉपी में बनाओगे यूनिट नंबर 8 लेसन 1 का, और लेसन नंबर 1 आप बुक में ही कंप्लीट करेंगे. ऑलराइट, नाउ कम टू द लेसन नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप्स. So you also make a title page of unit number 8 and lesson number 2, properties of 3D shapes in your copy. As I told you that 3D shapes are made up of faces, edges and vertices. Now look at your question number 1 on page number 74.
Okay, so what is a face? Face is a flat surface of a solid shape. Look at this. This is a flat surface. This all are faces. ठीक है? And what is edge? An edge is a where two faces meet. Edge क्या होता है? जहाँ पर दो faces आपस में meet करते हैं. This one and this one. These are meet on this line. This is called an edge. Now what is vertex? Vertex is another words we can use for a corner. वर्टेक्स क्या है? कॉर्नर, यानी शेप्स के जो कॉर्नर है वो क्या कहलाते हैं? वर्टेक्स कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं ज्वाइन द क्लूज टू द मैचिंग शेप्स. आपके पास कुछ क्लूज यहाँ पर गिवन है आपको. लुक एट हियर, दीज आर द क्लूज. और ये शेप्स हैं आपके पास. आपको करेक्ट शेप को करेक्ट क्लू से ज्वाइन करना है. Okay, so look at this shape. This is a square base pyramid. This is a cuboid. This is triangular prism, cube, and this is a tetrahedron. Okay. Now look at this clues. 6 square faces and 8 vertices. Which shape is this? 6 square faces and 8 vertices. ऐसी face, ऐसी shape जिसके 6 square face हो और उसके 8 क्या हो? Vertices हो. Look at this.
This is a cube and it has 6 square face, 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6 face and 8 vertices, 1, 2, 3, 4 and also 5, 6, 7 and 8. So this is the cube. So we join this cube by this shape. Okay friends, now look at another clue, part B, 4 rectangle faces and 12 edges. Which shape is this? That has 4 rectangle faces. कौन सी वो shape है जिसके 4 rectangle faces होते हैं और 12 edges? So this is the cuboid because it has 4 rectangle face and 12 edges. This is the cuboid. It has 4 rectangle face, 1, 2, 3 and also the 4 face. Okay, and it has 12 edges. So we join this clue by this. You also count the edges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and this is 12. Okay, so it has 12 edges. Alright, now look at another clue, 2 triangle faces and 9 edges. वो कौन सी shape है जिसके 2 triangle faces होते हैं और 9 edges? Look at this shape. This is a triangular prism. It has 2 triangle face. ठीक है, इसके कितने triangle faces हैं? 2 triangle faces हैं. And look at here, we count the edges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this is the 9 edge. Alright, so we join this clue by this. The next one is 4 triangle faces and 5 vertices. Which shape is this? जिसके 4 triangle faces हो और 5 vertices हो. So look at here. This is a square base pyramid because it has 4 triangle faces, 1, 2, 3 and 4. We also count the vertices. 1, 2, vertices are the corners, 1, 2, 3, 4 and this one is 5. It has 5 vertices. So we join this by this. Look at the last 4 triangle faces and 4 vertices. ऐसी शेप जिसके 4 triangle faces और 4 vertices, that is tetrahedron. Now look at your question number 2. Using the net provides, make 3D shapes and complete the table below. Can you spot a pattern between the numbers of faces, edges and vertices? You have a column. ठीक है, आपके पास एक कॉलम बना हुआ है जिसमें शेप्स नेम आपके पास लिखे हुए हैं, क्यूबाइड, टेट्राहेड्रन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्यूब और स्क्वायर बेस पिरामिड. यू हैव टू राइट नंबर ऑफ फेसेस है, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस. यानी आपको नंबर ऑफ फेस, एज और वर्टिस काउंट करके इस कॉलम में लिखने हैं. सो लुक एट योर क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so look at your question number 2. You have to write here number of faces, edges and vertices. Cuboid, tetrahedron and triangular prism. 2 और है, cube, square base pyramid. You have to solve cube and square base pyramid yourself. Look at here, cuboid. How many faces in cuboid? Cuboid में कितने faces होते हैं? Look at this cuboid. A cuboid has 6 faces. 1, 2, 3 and this is 4. 5 and this is 6. Number of faces कितने हैं क्यूबाइड में? 6. So we write here 6. How many edges? Edges कितने हैं इसके? Edges are the meeting point of 2 faces. You count here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and this is 12. Cuboid has 12 edges and how many vertices it has? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. It has 8 vertices. Okay. Next one is tetrahedron. How many faces tetrahedron has? A tetrahedron has 4 faces. 1, 2, 3 and also it has 4. So it has 4 faces. We write here 4 and how many edges? Count here edges. This is the tetrahedron. 1, 2, 3, 4, 5 and also this it is 6. Number of edges are 6. Now how many vertices? Vertices कितने हैं इसके? 1, 2, 3 and this one is 4. It has 4 vertices, 4 faces and also 4 vertices.
Next one is triangular prism. Look at here, this is a triangular prism. Triangular prism has 1, 2, 3, 4 and this is 5 faces. We write here 5 and edges, count the edges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this one is 9. It has 9 edges. Now count the vertices, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It has 6 vertices. Okay sirs, I hope you have got it. You have to complete cube and square base pyramids yourself. Now come to the lesson number 3, that is polygon. Okay, so you make the title page of unit number 8, lesson number 3 in your copy and complete your word in your book. Lesson number 3 is polygon. What are polygons? Polygons are closed 2D shapes. ठीक है, polygon क्या होता है? A polygon is any 2D shapes with straight side. वो shape जिसके straight side हो और क्या हो वो? A polygon is any 2D shape. Look at the definition. Any 2D shapes with straight side is called a polygon. Look at this shape. This is a pentagon. ठीक है? It has 5 sides. 1, 2, 3, 4 and this is the 5. It is a 2D shape. ठीक है? 2 dimension shape है ये, जिसकी सिर्फ length और width है. So the shape that has 2 dimensions are called a 2D shapes, and a closed shape with a straight side is called a polygons. You can see here on page number 76 there are so many polygons. Triangle that has 3 sides. ठीक है, वो shapes जिसके 3 sides होते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास? Triangles. Polygon that has 4 sides. ऐसा polygon जिसके 4 sides हो like this, 1, 2, 3 and 4. This polygon is called a quadrilateral. Okay, what is the name of this shape? This is a quadrilateral. A quadrilateral has 4-sided shape. The next one is pentagon. Pentagon is also a polygon. It has 5 sides. This is the pentagon. 1, 2, 3, 4 and 5. This is a pentagon and this is also a polygon. Polygon तो हैं ये सारे, लेकिन इनके specific name भी हैं. 3-sided shape is called a triangle. 4-sided shape is called a quadrilateral. 5-sided shape is called a pentagon. 6-sided shape is called a hexagon. And a 7-sided shape is called a heptagon. 8-sided shape is called a octagon. And 9-sided shape is called a nonagon. And 10-sided shape is called a decagon. Alright. Now come to the question number 1. Name each of these shapes. Write whether they are regular or irregular shape. Okay, you have to memorize these shape name from page number 76. Okay, friend, you must memorize the names of shapes. Question number 1, name each of these shape. आपको हर shape का name लिखना है, उनके sides count करके. ठीक है, ये आपके पास shapes given है, इनके sides count करके आप इनके name लिखेंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि this is regular or irregular. Now what are regular or irregular? On a regular shape, all the sides are of the same length. यानी वो shape, वो polygon जिसके सारे ही side same length के हो, वो कौन सी shape होती है? Regular होती है. और वो shape जिसके सारे side यानी जो shapes के जो sides हैं वो different length के हो, तो वो आपके पास कौन सी shape होती है? Irregular. Look at the definition. रेगुलर शेप में जो सारी साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम लेंथ के होते हैं. और इररेगुलर शेप
all sides are of different length. ठीक है, you can see here on page number 76. This is a pentagon. This is also a pentagon. ठीक है, दोनों ही pentagon है. But look at this. All sides are of the same length. सारी जो sides हैं उनकी length क्या है? Same है. So this is the regular pentagon. And look at this. All sides are of different length. सारी sides जो है वो different length की हैं. So this is irregular pentagon. All right. Now look at question number 1. Look at question number 1 on page number 77. You have to memorize the shape's name from page number 76. Okay, friends? Okay, so look at this part A. What is the name of this polygon? These all are polygon, but it also has a specific name. सबका जो है specific name है. Count the sides 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is a six-sided shape, and six-sided shape is called a hexagon. So we write here hexagon. लेकिन आपको ये भी बताना है कि ये रेगुलर है या इरेगुलर. Look at the sides. All sides are of different length. ये वाली साइड अलग इसकी मेजरमेंट है, यानी अलग इसकी लेंथ है, इसकी अलग है, इसकी डिफरेंट है, इसके आल्सो डिफरेंट, इट हैज आल्सो डिफरेंट. ठीक है, सो दिस इज अ इरेगुलर हेक्सागन. वी राइट हियर इरेगुलर. दिस इज इरेगुलर हेक्सागन. लुक एट अनदर शेप. This is a polygon. ठीक है. What is the name of this? It has three sides. 1, 2 and 3. And three-sided shape is called a triangle. And all sides are the same length. सारी ही साइड जो है वो same length के हैं. तो ये कौन सा triangle होगा? Regular triangle. We write here regular and also triangle. Look at this shape. We know this shape very well. What is the name of this? This is a curved rectangle. But here we write the name of polygon. यहाँ हम polygon के name लिख रहे हैं. तो यहाँ आप four-sided shape का name लिखेंगे. What is four-sided shapes are called? The four-sided shapes are called quadrilaterals. Okay? Quadrilateral कहलाते हैं जो four-sided shapes होती हैं आपके पास. And look at the sides. All sides are of different length. ठीक है, अपोजिट साइड्स तो सेम लेंथ की हैं, लेकिन सारी जो है वो सेम लेंथ की नहीं है. That's why it is irregular quadrilateral. वैसे तो देखने से ये रेगुलर ही लग रहा है, बट ऑल साइड आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. अपोजिट साइड्स तो सेम लेंथ की हैं, लेकिन जो सारी कंप्लीट इसमें साइड्स हैं वो सेम लेंथ की नहीं है. That's why it is irregular quadrilateral. You must memorize the names of shape. ठीक है, आपको सारी स्पेलिंग सही से याद करनी है. quadrilateral QUADRILATERAL. This is quadrilateral. Now look at part D. This is a heptagon. It has 7 sides. ठीक है, and it is part F. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. This is nonagon, irregular nonagon. You can see here all sides are of different length. All sides of different length. This is also irregular. This is regular. This is octagon.
This is a regular quadrilateral. This is also regular quadrilateral. अगर आप चारों साइड्स को मेजर करेंगे तो सारी साइड्स क्या होंगी, सेम लेंथ की होंगी. दिस इज द इर्रेगुलर ट्राइंगल बिकॉज ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ. ठीक है, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट लेंथ है इसकी. तो ये कौन सा हो जाएगा, इर्रेगुलर. यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क फ्रॉम योर गिवन कंटेंट सॉल्यूशन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. नेम द ओड पॉलीगॉन इन ईच सेट. Now come to the question number 2 on page number 78. First one, look at part A. All shapes are irregular pentagon. 1, 2, 3, 4, 5, 5-sided shape, pentagon. 1, 2, 3, 4, 5, pentagon. 1, 2, 3, 4 and 5, also a pentagon. Count this, 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6. This is a 6-sided shape and the name of this shape is hexagon. 1, 2, 3, 4 and 5, this is also pentagon. 1, 2, 3, 4 and 5, this is also pentagon. All shapes are pentagon. सारे ही जो polygons हैं आपके पास वो pentagon है except this. This is a hexagon. So we put the circle on this and right here hexagon. Hexagon क्या है इसमें, odd one out है. You have to solve part B yourself. Look at part C. Count the sides. 1, 2, 3, 4. This is a quadrilateral because it has 4 sides. 1, 2, 3, 4. 4-sided shape. 1, 2, 3, 4. This is also 4-sided shape. 1, 2, 3, 4. 4-sided shape. 1, 2, 3, 4 and 5. But this is a 5-sided shape. This is a pentagon. 1, 2, 3 and 4. All shapes are quadrilateral. सारी ही shapes आपके पास quadrilateral है except this. This shape is odd one out. So we put the circle on this shape and right here pentagon. Okay, sir, you have to solve part B, D yourself and you complete your unit number 8 in your book. Now come to the lesson number 4, that is quadrilaterals. Yes, sir, look at unit number 8 and lesson number 4, that is quadrilateral. ठीक है, as I told you that what is the means of quadrilateral? Quadrilateral is a 4-sided shape. So look at the definition here. The 4-sided shape is called a quadrilateral. Okay, you can see here on page number 80 there are so many quadrilaterals. Look at the first one. This is a square.
Okay, it has 4 sides and the name of this shape is square. The next one is, it is also have a 4 side and it is called a rectangle. Next one is, this is a 4-sided shape and the name of this shape is rhombus. This is also have 4 sides, 1, 2, 3 and 4. The name of this shape is parallelogram. And the next one is, it also has 4 sides, 1, 2, 3 and 4. This is called kite. And the last one is 1, 2, 3, 4. It has 4 sides and this is called trapezium. Okay? A square has 4 equal sides and 4 right angle. What are right angle? The angle that has 90 degree angle. ठीक है? Right angle 90 डिग्री का एंगल जिसके पास होता है वो कौन सा एंगल कहलाता है आपके पास? राइट एंगल कहलाते हैं। स्क्वायर में जो चारों ही एंगल्स होते हैं, चारों साइड्स भी इक्वल होते हैं स्क्वायर के, और चार जो एंगल्स हैं उसमें वो क्या होते हैं? राइट एंगल। 4 साइड्स आर इक्वल एंड 4 राइट एंगल्स। द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल हैज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, 2 पेयर्स होते हैं उनके पास इक्वल साइड, यानी अपोजिट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। दिस इज अ रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, यानी जो दिस साइड एंड दिस साइड, these 2 sides are of the same length, and this side are of the same length. It has 4 sides, 1, 2, 3, 4 and also 4 right angle, 1, 2, 3 and 4. Right angle is a 90 degree angle. ठीक है, सारे ही कौन सा एंगल होते हैं इसमें? 90 डिग्री का एंगल। The next one is rhombus. What is a rhombus? Rhombus have 4 sides and 4 equal sides. सारे ही इसके equal side तो होते हैं, look like a square, square की तरह ही दिखता है, but it not have a right angle. इसके right angle नहीं होते हैं, angle इसके 90 से less होंगे और 90 से more होंगे। Opposite sides are equal, यानी opposite angle तो इसके same होते हैं। You can say this is a rhombus. ठीक है, चारों साइड इसके सेम है, like a square. This is the square. Square है 4 equal side and 4 right angle. स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं और 4 इसमें राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। रोम्बस है आल्सो 4 साइड, रोम्बस के भी 4 साइड्स होते हैं एंड 4 इक्वल साइड्स, चारों साइड्स इक्वल भी होते हैं, बट इट नॉट हैव अ राइट एंगल। इसके राइट एंगल नहीं होते हैं, बल्कि 90 से लेस और 90 से मोर यहाँ एंगल बनता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैज 4 साइड एंड अपोजिट साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। अपोजिट साइड की क्या होती है? इक्वल लेंथ की होती है, एंड इट हैज 4 राइट एंगल, और 4 इसमें क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। द नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम। Parallelogram is look like a rectangle, but the difference between them is that opposite sides are equal. Opposite sides इसके भी same होते हैं, like this. This one and this one are of equal length. This one and this one are of equal length. But it has 4 right angle. इसके 4 right angle होते हैं, इसमें right angle नहीं होते हैं। यहाँ angle 90 से less और greater यानी अलग बनते हैं। 90 नहीं बनते, यहाँ पे 90 से greater और less के angles होते हैं। Next one is kite. It has 4 sides. A kite 2 pairs of adjacent sides equal. 2 pair adjacent sides जो joining sides हैं, यानी this side and this side. These are of same length. This side and this side are of same length. ये वाले sides की वाले side की length same है, and this one, these adjacent sides are of same length, and it has 1 right angle. इन दोनों के दरमियान में एक right angle भी बनता है। Alright. The next one is trapezium. लास्ट वन है ट्रेपेजियम, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ऑलराइट, इट आल्सो हैज अ 4 साइड। ट्रेपेजियम आल्सो हैज अ 4 साइड एंड 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, व्हाट आर पैरेलल लाइंस? द लाइंस व्हिच कैन नेवर बी मीट आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस। वो लाइन जो एक दूसरे को मीट नहीं करती वो आपके पास कौन सी होती है? पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम के पास जो है एक जो है पैरेलल लाइंस का सेट होता है ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी उनका साइड की जो लेंथ है वो क्या है? डिफरेंट है। आप ये देख सकते हैं कि ये स्मॉलर है एज कम्पेयर टू दिस, ये ग्रेटर है। तो आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे? 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। इसके पास एक पेयर होता है पैरेलल लाइंस का विद दैट हैज डिफरेंट ऑफ लेंथ। ऑलराइट, यू हैव टू मेमोराइज दिस क्वाड्रिलेटरल फ्रॉम पेज नंबर 80. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज द odd shape out in each set. Name the odd one out.
Page number 80. Look at part A. Okay, so look at part A and D. Look at this shape. This is the trapezium. This is also a trapezium. Trapezium, trapezium, trapezium. All shapes are trapezium except this. This is the rhombus. So we put circle on it. This is the odd one out. What is the name of this shape? This is the rhombus. We write here rhombus. Look at part D. All shapes are square, 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 and also has a square. But look at this shape. This is a rectangle. So we put on a circle on it and write the name here. Okay, you have to solve part BC from the given content solution. Now come to the question number 2. Okay, so look at the question number 2. Look at these shapes and complete the chart by ticking the names. ठीक है, आपको जो है चार्ट कंप्लीट करना है टिक करके. रिमेंबर सम शेप्स में हैव मोर देन वन नेम, यानी हो सकता है कि कोई एक शेप 2 दफा भी आ सकती. ठीक है, लाइक दिस. शेप्स नेम यहाँ लिखे हुए आपके पास A, B, C, D, E, F, G and H. And the shapes are square, rhombus, rectangle, parallelogram, trapezium, and the last one is kite. Okay, these are all the shape name. You have to see carefully these shapes. Look at shape A. This is the rectangle. Okay, what is the name of this shape? This is a rectangle. Look at here, rectangle. We put the tick on this column. ठीक है, हमारे पास जो A shape है वो क्या है? Rectangle है. Shape B देखिए, this is a kite. What is the name of this shape? This is a kite. Look at here, kite. B shape हमारे पास क्या है? Kite. So we tick here. Look at C. This is a square. Look at here, square. We mark on this column. C पर हम mark करेंगे. Look at D. This is a parallelogram. All right. Look at here, parallelogram. D. We mark tick here. यानी D shape हमारे पास क्या है? Parallelogram है. Look at E. This is a trapezium. All right. This is a trapezium. So we mark tick here. F shape देख लीजिए. This is a rectangle. देखिए rectangle हमारे पास आ चुका था. पार्ट ए जो शेप थी, सॉरी शेप ए जो थी वो आपके पास क्या है? रेक्टेंगल है. और एफ शेप भी आपके पास क्या है? रेक्टेंगल. सो वी मार्क हियर. लुक एट जी. दिस इज द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम डी भी है और जी भी है.
mark on G. Look at shape H. This is a rhombus. Okay, rhombus पे हम टिक करेंगे. Okay, sir. I hope you have got it. You have to complete this work in your copy. Now look at that. Try this. Draw each shape in its correct place on the diagram. You have some shapes like this. ठीक है, जो ऊपर shapes हैं आपके पास वही आपके पास नीचे भी है. आपको बताना है कि which shapes are quadrilateral and right angle. यहाँ पर आपने वो shape draw करनी है. ठीक है, नेम नहीं लिखने बल्कि shape draw करनी है. वो shapes जिनका right angle भी हो और वो quadrilateral भी हो. यहाँ आप वो shape draw करेंगे जो quadrilateral तो है but not a right angle. उनके अंदर right angle नहीं है, यानी 90 डिग्री का एंगल. नेक्स्ट वन इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल बट अ राइट एंगल. वो क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है लेकिन उसमें क्या होंगे, राइट एंगल होंगे. और यहाँ आपको वो शेप ड्रॉ करनी है जो नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ना ही वो क्वाड्रिलेटरल हो और नॉट अ राइट एंगल, यानी उनमें राइट एंगल भी नहीं हो. ऑलराइट, सो लुक एट यू, ट्राई दिस ऑन पेज नंबर 81. Look at, try this. Draw each shape in its correct place on the diagram. You have a diagram, ठीक है, आपको correct place पर diagrams draw करनी है. Look at shape A. This is a square, ठीक है. Square has 4 equal sides and 4 right angle. So we make here. यहाँ हम बनाएंगे right angle को, square को, because it has a 4 right angle. Quadrilateral भी है ये, यानी 4 sided shape है और इसमें 4 right angle भी है. So we draw here. Look at the next shape. This is a rectangle. Rectangle has also 4 side and also right angle. So we draw here because it is right angle and also a quadrilateral. Look at the next shape. This is a rhombus, ठीक है, rhombus है ये. It has a 4 side and but not a right angle. इसमें right angle नहीं होते हैं आपके पास. So we draw here, यानी not right angle but the quadrilateral. हम यहाँ draw करेंगे rhombus को. Look at another shape. This is a parallelogram. Okay, it also a quadrilateral because it has 4 sides but not a right angle. So we draw here. Look at the next shape. This is a kite, and I told you that kite has a 1 right angle. Kite में यहाँ पर एक right angle होता है. That's why we draw here. This is a kite. Look at this. This is a triangle. ठीक है. It is not a quadrilateral and not a right angle. इसके अंदर ना ही quadrilateral है और ना ही right angle है. तो हम इसे यहाँ ड्रॉ करेंगे. Look at this shape. This is a right angle triangle. वो triangle जिसके अंदर एक right angle होता है यानी 90 का एंगल बनता है. This is called a right angle triangle. इसके अंदर एक 90 का एंगल है but it is not a quadrilateral. ये quadrilateral नहीं है. That's why we draw here not a quadrilateral but a right angle. Okay, it has a right angle. Next one is pentagon. Pentagon is not a quadrilateral and not has a right angle. तो इसे हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. ना ही ये क्वाड्रिलेटरल है ना ही इसमें क्या है, राइट एंगल है. सो वी ड्रॉ हेयर. लुक एट दिस. दिस इज अ हेक्सागन. 1 2 3 4 5 and 6. It has 6 sided shape. So this is called a hexagon and it has not a right angle. यहाँ भी राइट एंगल नहीं है तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे इसे भी. Look at the next one. This is also a pentagon but it has 2 right angle. ये भी pentagon है आपके पास लेकिन इसमें 2 right angle है. So we draw here.
not a quadrilateral but a right angle. Okay, so this one and this one, there are two right angle और ये भी right angle है. Okay, so you have to complete your all work in your book and make the title page in your copy and write the definitions in your copy. Now look at your diary. Memorize all the shapes name. All right, you must memorize the names of shape. Okay students, I hope you have got it and must complete your all work. If you have any doubt, any confusion, watch this video again. We will meet inshallah in our next video. Till then, take care. Allah Hafiz.